Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In previous lecture, we have discussed about the physical media, that is guided media, in which we have discussed about the twisted pair cable, and then we have discussed about the coaxial cable. So in today's lecture, I would like to discuss about the third type of the physical media, that is optical fiber. So what is optical fiber? Definition: it is that type of guided media associated with the transmission of information as light pulses along a glass or plastic fiber. ये भी एक गाइडेड मीडिया की एक टाइप है जो इंफॉर्मेशन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को मुंतकिल करता है एट वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल. In the speed of light, and the light of speed is 3 exponent 8 meter per second. So just like the speed of light, it transmits data from one point to another along a glass or plastic fiber, along this glass core. So we will discuss about this glass core and its construction. So ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी एक गाइडेड मीडिया है जो डेटा को, वेदर इट इज़ वीडियो और ऑडियो और डेटा और समथिंग एल्स, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है बनिस्बत कोएक्स केबल के एंड ऑप्टिकल ट्विस्टेड पेयर केबल. ठीक है, इसकी स्पीड की रेंज फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 500 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है. इसकी कंस्ट्रक्शन पर इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? देयर आर 4 पार्ट्स इन द ऑप्टिकल फाइबर. द फर्स्ट वन, ग्लास और सिलिका कोर. सो लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. This is in optical fiber. The first portion of this optical fiber consists of this component, which is called a core, glass core. This is a glass core. ठीक है? It is made from a silica. Glass, it is made from glass, plastic और सिलिका. ये ग्लास से बना होता है, इसलिए इसे ग्लास कोर भी कहा जाता है. ठीक है? जिस तरह कोएक्सियल केबल में वो कॉपर एल्यूमिनियम से बना था, तो ये ग्लास या सिलिके से बना हुआ है. इसकी जो क्वालिटी है वो कोएक्स केबल की निस्बत अच्छी होती है. ठीक है? एंड दिस ग्लास कोर इज सराउंडेड बाय दिस वन, दिस मटेरियल. दिस इज द मटेरियल विच सराउंडेड द ग्लास कोर. This material is made from which is called cladding. This is called cladding. Cladding is made from silica. So this cladding is made from silica, and the function of this cladding is to minimize the losses of signal. Cladding का function ये है कि इस signal loss को कम से कम किया जा सके, signal loss को कम किया जा सके, और in order to remove the noise को ख़त्म किया जा सके. ठीक है? The third part is this one. This too has been surrounded by this third layer, which is called plastic buffer. This is a plastic buffer. This layer is made from a plastic, which is called plastic buffer, and this layer protects these 2 layers. देखो ये इसका काम क्या है? इसको क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करना. ठीक है? एंड फाइनली द फाइनल वन इज द आउटर जैकेट, विच इज मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक. दिस इज द आउटर जैकेट दैट इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक in order to provide protection to the optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर एक तह चढ़ाई जाती है जिसको आउटर जैकेट का नाम दिया गया है. ठीक है? ताकि ये डैमेज ना हो सके, बाहर से लाइट से भी प्रोटेक्ट हो, वाटर से भी प्रोटेक्ट हो, एक्सटर्नल डैमेज से भी प्रोटेक्ट हो. तो यहाँ पर आउटर जैकेट लगाया जाता है. इन लेयर्स का काम ही क्या है? नॉइस को रिमूव करना.
ठीक है, और लॉस ऑफ सिग्नल को कम से कम रखना। इस तरह in order to remove the electromagnetic interference effects, इसका ये फंक्शन in order to provide external protection. So the first one consists of glass or silica core, we have explained it. Second part consists of cladding made of silica, discussed already. And third part is called plastic buffer. And fourth one is the outer jacket. This is outer jacket made from of the plastic in order to provide external protection. Now, how does optical fiber work on the principle of the total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो प्रिंसिपल होती है उस पर ये काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह होती है? लाइट सिग्नल यहाँ से एक इस ग्लास कोर की एक तरफ दाखिल होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ पर निकल जाती है। लेट्स सपोज दिस इज दी ग्लास कोर, ठीक है, इस तरफ पर सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है, और इस तरफ पर निकल जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है, जब ये सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट आती है तो इस वॉल से टकराती है, और वॉल से टकराने के बाद अगर इसकी ज़ाविया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये बाउंस बैक हो जाती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर कोलिजन के बाद इस वॉल से टकराने के बाद ये दोबारा मुनकिस हो जाती है, इस साइड पे आती है, और इस साइड पर रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड पे आती है। इस तरह यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस लाइट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो होती है, इससे जो इंसिडेंट एंगल की जो ज़ाविया होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो टोटल एंड फिर इसकी मूड है सिंगल मूड, मल्टी मूड, इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बट दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। सो एज फार एज द अदर मीडिया आर कंसर्न, अदर फिजिकल मीडिया आर कंसर्न, द ऑप्टिकल फाइबर has more advantages as compared to the twisted pair cable and coaxial cable. Its bandwidth is very high as compared to the twisted pair and coaxial cable. Speed is very high because it works on the principle of total internal reflection, and it uses the speed of light. So as far as speed is concerned, it is very fast media as compared to the coaxial and twisted pair cable, and it is very secure for the transmission of data from one place to another. So these are the advantages. We will discuss about the advantages and disadvantages of the optical fiber in the next lecture. So this is the end of this topic, and I hope you will enjoy it. Thanks for watching. Allah Hafiz.